गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है उन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिलीज़ की है और ये जो है हमारे को असेसमेंट देती है इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का। हर 2 साल में इसे पब्लिश किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। पहली रिपोर्ट 1987 में आई थी। और डेटा कैसे कंप्यूट किया जाता है? वॉल टू वॉल मैपिंग की जाती है इंडिया के फॉरेस्ट कवर की। 3 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट जो है सर्वे किए जाते हैं: वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और स्क्रब्स। अब फॉरेस्ट कवर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का है और उसमें ट्री कैनपी जो है वो 10% से ज़्यादा की है, उसको हम फॉरेस्ट मानते हैं। अब ट्री कवर क्या होता है? ट्री पैचेस जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं और वो कम से कम जो है 1 हेक्टेयर से कम एरिया में वो ट्री पैचेस हैं, तो उसको हम ट्री कवर मानते हैं। अगर हम हाइलाइट्स देखें, फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है 25.17% इंडिया के जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखने को मिला है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में, वो छत्तीसगढ़ में है। फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज़ देखने को सबसे ज़्यादा हमें मिज़ोरम में मिला है। और स्टेट वाइज अगर हम देखें, टोटल एरिया जो फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जोग्राफिकल एरिया जो है लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेक्सस रिपोर्ट। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द इंटरलिंकेजेस अमंग बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम नेक्सस रिपोर्ट कहते हैं, वो भी रिलीज़ कर दी गई है IPBES द्वारा। तो IPBES क्या है? जैसे IPCC आपके क्लाइमेट चेंज के लिए है, वैसे ही साइंटिफिक नॉलेज जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स पर इवेल्युएट करता है वो IPBES है। 2012 में इसे बनाया गया था। IPCC की तरह ये भी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं बनाता है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का अगर हम देखें, रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस हैं ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हंगर, वाटर स्कार्सिटी और हेल्थ रिस्क के बीच में। इन इश्यूज़ को सेपरेटली डील नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इनको इकट्ठे होकर जो है समझ कर डील करना चाहिए। और अगर देखें तो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो सिग्निफिकेंटली हार्म कर सकती हैं बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट को, फूड प्रोडक्शन, वाटर, हेल्थ को, जिससे अनअकाउंटेड कॉस्ट लगभग हमारी 10 से 25 ट्रिलियन डॉलर एनुअली होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर हम आइसोलेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे, तो जैसे अगर हमें हंगर को टैकल करना है तो उसकी वजह से हम अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे प्रेशर ऑन लैंड, वाटर और बायोडाइवर्सिटी पर पड़ेगा। फिर कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में बोला गया कि अगर हम लैंड और ओशन को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो हम फिर फूड सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए रिपोर्ट कह रही है कि इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज अपनाओ, ताकि सारे चैलेंजेस जो हैं वो जो पाँचों के पाँचों चैलेंजेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, एफर्ट्स लगाने चाहिए हमें रिपोर्ट के मुताबिक कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो सके और कंजम्पशन भी हो सके। ठीक है, तो ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP जो है 58 ट्रिलियन का लगभग, वो नेचर पर ही डिपेंड करता है, ये रिपोर्ट कह रही है। और रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इमिडिएटली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सस्टेनेबल नेचर पॉजिटिव मॉडल्स की, जिससे 10 ट्रिलियन डॉलर जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी आएंगे और 400 मिलियन जॉब जो है वो 2030 तक जनरेट भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने सशस्त्र सीमा बल की जो है को एड्रेस करते हुए कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक क्रूशियल लिंक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है वेस्ट बंगाल में, जो नेबरिंग कंट्रीज़ और चाइना नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे चाइना से जो है घिरा हुआ है। और इसकी विड्थ सिर्फ 20 किलोमीटर की है, लेंथ लगभग सिर्फ 60 किलोमीटर की है। इसको हम चिकन्स नेक भी कहते हैं। और ये नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अपने ये नैरोएस्ट पॉइंट पर ये 22 किलोमीटर का है सिर्फ। और नेपाल इसके वेस्ट में है, भूटान इसके नॉर्थ में है, बांग्लादेश इसके साउथ में है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इंडियन के मेन लैंड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए क्रूशियल है। एरिया जो है वल्नरेबल है एक्सटर्नल थ्रेट्स को, खासकर क्योंकि ये चाइना भूटान बॉर्डर के पास पड़ता है नॉर्थ में, और बांग्लादेश के पास पड़ता है साउथ साउथ डायरेक्शन से। एक वाइटल सप्लाई राउट भी है ये इंडियन आर्मी के लिए,
जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे फॉरवर्ड बेसिस पर जो आर्मी लोकेटेड है। तो क्रिटिकल है ये इंडिया की प्रिपरेडनेस के लिए अगेंस्ट चाइना, ठीक है। और इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना की चुंबी वैली में, वो एक स्ट्रेटजिक चैलेंज हमारे को पोज करती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक गेटवे है हमारे ट्रेड बिटवीन इंडियन मेनलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में। रीजन जो है वो एक बेस है टूरिज्म का, जो डेस्टिनेशन है जैसे दार्जिलिंग, गैंगटॉक या भूटान का, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, तो उसकी वजह से जो है ससेप्टेबल रहता है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स को। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग बांग्लादेश से, ये सब भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के। कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स भी हैं, जैसे कि पुअर रोड और रेल कनेक्टिविटी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है रोड और रेल नेटवर्क्स में इन्वेस्ट कर रही है। बागडोगरा एयरपोर्ट बनाया गया है, इम्प्रूव्ड रेल कनेक्टिविटी दी जा रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के थ्रू। मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल क्या है? नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड है फोर्स। स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम से इसको 1963 में सेटअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्माइल प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का लोन साइन जो है वो साइन किया है स्माइल प्रोग्राम के लिए, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट का एफर्ट है रिफॉर्म करने का लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंडिया में। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स को इम्प्रूव करने के लिए ये स्माइल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पर जो है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा सके, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए जा सके, इंडिया के जो एक्सटर्नल ट्रेड ऑपरेशन हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लीवरेज करके एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो हैं उन्होंने एडवांस्ड फैसिलिटी फॉर पश्मीना सर्टिफिकेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग फैसिलिटी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में लॉन्च की है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? बेसिकली आप डिकोड करते हो सारे जीनोम को, और जेनेटिक डाइवर्सिटी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और पॉपुलेशन हेल्थ हमें उससे पता लग पाती है, ठीक है। तो पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर क्या है? इसको एस्टैब्लिश किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के बीच में, ताकि पश्मीना ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, सर्टिफाई किया जा सके जेन्युइन पश्मीना प्रोडक्ट्स को, और एक यूनिक आईडी और इंडिविजुअल ई सर्टिफिकेट्स दिए जा सकें टेस्टेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दिंगा डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिस्टीरियस इलनेस जो है युगांडा में जो है वो फैल रही है बहुत तेज़ी से, जिसका नाम लोकली रखा गया है दिंगा दिंगा। इसका मतलब है कि शेकिंग लाइक डांसिंग। तो ये विमेन और गर्ल्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इसमें फ़ीवर होता है और एक्सेसिव बॉडी शेकिंग होती है। अभी तक कोई ये क्या वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, ये कुछ नहीं पता लग पाया हेल्थ एक्सपर्ट्स को। इसमें होता क्या है कि अनकंट्रोलेबल बॉडी शेकिंग होती है, फ़ीवर होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, पैरालिसिस जैसी इमोबिलिटी हो जाती है। करंटली इसको भी जो है एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंटली जो है साहित्य अकेडमी जो है उन्होंने अपना एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। ये अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट को दिए जाते हैं। किसी भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस जो कि अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है उसमें अगर पब्लिश हुई हो जो बुक्स हों तो, ठीक है। 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भी जो है साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। तो इसमें एक प्लेक मिलती है, शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए अवार्ड में मिलते हैं। साहित्य अकेडमी को 1954 में बनाया गया था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर यह ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल तानसेन सम्मान। ये टॉपिक भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीनोन तबला प्लेयर जो हैं पंडित स्वपन चौधरी जो हैं कोलकाता के, उन्हें नेशनल तानसेन सम्मान जो है 2023 के लिए दिया गया है। 1980 में इस नेशनल तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने म्यूज़िक एम्परर तानसेन के नाम पर रखा था। हाईएस्ट नेशनल म्यूज़िक अवार्ड है ये इन द फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। अब तानसेन कौन थे? प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र, वोकलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। पहले ये रहे हैं अंडर द शेल्टर ऑफ दौलत खान, जो कि सन है शेर शाह सूरी के, सन थे शेर शाह सूरी के। बाद में ये नवरत्न बने, जो कोर्ट ऑफ अकबर को जिन्होंने अडॉन किया। अकबर ने इन्हें टाइटल दिया मियाँ का,
और इनको क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने कुछ फेमस राग भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे मल्हार, तोड़ी और दरबारी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईरिस 2 प्रोग्राम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट का, जो कि एक मल्टी ऑर्बिटल कॉन्स्टलेशन होगा 290 सैटेलाइट्स का। तो यूरोपियन यूनियन का थर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, ताकि सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स तीनों को दिया जा सकें। तो इसमें जो आयरिस 2 है, इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के द्वारा जो है डिप्लॉय किया जाएगा, और सिक्योर कनेक्टिविटी और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ये देगा। ठीक है, तो ये इंटरलिंक्ड सैटेलाइट जो हैं, इसमें 264 और 18 सैटेलाइट्स लो एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में रिस्पेक्टिवली डिप्लॉय की जाएंगी। इसको डेवलप किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद स्पेस राइज, जो कि एक अलायंस है लीडिंग यूरोपियन सैटेलाइट ऑपरेटर्स का और स्पेस कंपनीज का। ये सिस्टम जो है, इसको यूज़ किया जा सकेगा मैरीटाइम, रेलवे, एविएशन, ऑटोमोटिव, स्मार्ट एनर्जी, ग्रिड मैनेजमेंट, बैंकिंग, ओवरसीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, रिमोट हेल्थ केयर और रूरल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। इवन ये मोबाइल और फिक्स ब्रॉडबैंड सैटेलाइट एक्सेस भी देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी जो है ये दे सकेगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India State of Forest Report 2023. This topic is important for your environment section. So Union Minister for Environment has recently released the India State of Forest Report 2023 at the Forest Research Institute in Dehradun. So this report is an assessment of India's forest and tree cover, and it is published every 2 years by the Forest Survey of India under the Ministry of Environment. The first such survey was published in 1987. Okay, so how is the data computed for this report? So this data is computed through wall-to-wall mapping of India's forest cover through remote sensing satellites. So forest cover is defined as an area which is more than 1 hectare in extent and having tree canopy density of 10% and above. What is tree cover then? So tree patches which are outside these recorded forest areas that we have discussed just above, and they are, if they are less than minimum mappable area of 1 hectare, then this is called the tree cover. So what is the total forest and tree cover in India? So it covers about 25% of India's geographical area, and we have witnessed forest and tree cover increases the most in Chhattisgarh. The forest cover increase has been witnessed the most in Mizoram. State wise, the total area under forest and tree cover is maximum in Madhya Pradesh, but the highest forest cover by geographical area is in Lakshadweep, which is about 91% of the area of Lakshadweep is forest cover. Okay, so the next topic is Nexus report. This topic is important again for your environment section. So assessment report on the interlinkages among biodiversity, water, food, health and climate change, which is also known as the Nexus report, has been released by the IPBES. So IPBES is similar to IPCC, which is meant for climate change, but IPBES is meant for evaluating the existing scientific knowledge on biodiversity and ecosystems so as to assess the current state. So IPBS is it was established in 2012, and like IPCC, it does not produce any new science, but it only evaluates the existing knowledge to make consolidated assessments. Okay, so what does this report, Nexus report, is saying? So this report is highlighting the strong interconnections between global challenges like climate change, biodiversity loss, hunger, water scarcity, and health risk. So these 5 challenges have been identified, and it is being said that tackling these 5 challenges separately is not only ineffective but also counterproductive. And these 5 challenges would account for about 10 to 25 trillion annual unaccounted costs. And what are the risks of isolated approaches? So scaling up to tackling hunger will increase pressure on land, water and biodiversity. Similarly, if you try to protect land and oceans, then you will end up restricting options for your food security and climate change mitigation. So therefore there is a need for integrated strategies so as to deliver benefits across all the 5 challenges that we discussed above. Efforts must prioritize actions that balance sustainable production and consumption. The report has also highlighted that over half of the global GDP, which is about $58 trillion dollars annually, it depends on nature. So therefore, immediate implementation of sustainable nature positive models should be made so as to unlock $10 trillion in business opportunities and create 400 million jobs by 2030. Okay. So the next topic is Siliguri corridor.
This topic is important for your security section. So, Union Home Minister has recently highlighted the significance of Siliguri corridor as a crucial link to Northeast India, and he has said that in the presence of Sashastra Seema Bal. So, this Siliguri corridor is a narrow stretch of land which is located in West Bengal, and it is critical to the India's territorial integrity due to its proximity to neighboring countries like China, and it has a width of about 20 kilometers and a length of about 60 kilometers. It is also referred to as the Chicken's Neck. So it is flanked by Nepal to the west, Bhutan to the north, and Bangladesh to the south. It links the northeastern region with the mainland India. Okay, this corridor is crucial for maintaining India's territorial integrity. This area is vulnerable to external threats given its proximity to China Bhutan border in the north and Bangladesh in the south. It is a vital supply route for the Indian Army, particularly for the forward bases that we have in Sikkim and Arunachal Pradesh. It is also critical for India's preparedness against China. So, its proximity to China's Chumbi Valley, which is at the tri-junction of India, China, and Bhutan, poses a strategic challenge to us. Okay, Siliguri corridor is a gateway for trade between mainland India and northeastern states. This region is a base for tourism and to destinations like Darjeeling, Gangtok, and Bhutan. Okay, so this narrow width of corridor makes it highly susceptible to natural disasters as well. But there are other security concerns like cross-border terrorism, illegal migration, and smuggling from Bangladesh. Despite its importance, this corridor also faces infrastructure deficits, including poor road and rail connectivity. So that's why government is making investments in road and rail networks here, including through the Bharatmala Prayojana and Golden Quadrilateral. We have also developed the Bagdogra airport here so as to improve access to this region, and we are also improving rail connectivity through the Northeast Frontier Railways. Okay, modern integrated checkposts are also being created at the borders of Nepal and Bangladesh to streamline trade and security. So, what is Sashastra Seema Bal? It is the border guarding force of India deployed along the borders with Nepal and Bhutan, and this force was originally set up under the name of Special Service Bureau in 1963. Okay, so the next topic is Smile program. This topic is important for your economy section. So Indian government and the Asian Development Bank have signed a landmark $350 million policy-based loan for the Smile program, which is meant to support the government in undertaking wide-ranging reforms in the logistics sectors of our country. The aim is to expand India's manufacturing sector and improve the resilience of its supply chains. So the key pillars of this program include strengthening the institutional frameworks at the national, state, and city levels, then to standardize warehousing so as to establish uniform standards, to streamline supply chains and attract private investments, then to improve trade logistics. We have to enhance the efficiency of India's trade operations, external trade operations, and leveraging advanced technologies by promoting smart low emission systems. Okay, so the next topic is next generation DNA sequencing. This topic is important for your science and tech section and also your environment section. So, Union Minister for Environment has recently inaugurated the Advanced Facility for Pashmina Certification and Next Generation DNA Sequencing Facility at the Wildlife Institute of India, Dehradun. So, this is a revolutionary technology which enables rapid and high throughput decoding of entire genomes, analyzing millions of DNA sequences simultaneously. So, this would allow the researchers to gain deeper insights into genetic diversity, evolutionary relationships, and population health. So, what is Pashmina Certification Center? So it was established under a public-private partnership model between Wildlife Institute of India and the Export Promotion Council for Handicrafts. The aim is to streamline the Pashmina trade, certify the genuine Pashmina products, and label these certified products with a traceable unique ID and with individual e-certificates. Okay. So the next topic is Dinga disease. This topic is important for your social issues. So recently, a mysterious illness which is locally being referred to as Dinga Dinga has wreaked havoc in Uganda. So it is locally called Dinga Dinga, which means shaking like dancing, and it is predominantly infecting the women and girls, and it is characterized by fever and excessive body shaking. Health experts have yet to pinpoint its source, whether it is a bacterial disease or a viral disease, yet it is being currently treated with antibiotics. Okay, so the symptoms of this disease include uncontrollable body shaking, fever and extreme weakness, and paralysis like immobility. Okay,
So the next topic is Sahitya Academy Awards. This topic is important for your art and culture section. Recently, Sahitya Academy has announced the annual Sahitya Academy Awards which have been recommended by the jury members in 21 languages. So this is an award. This is awarded for the most outstanding books of literary merit published in any of the major Indian languages, which have been recognized by the Academy. Apart from the scheduled 22 languages, this Academy also recognizes English and Rajasthani as languages in which the program may be implemented. The authors and poets will receive a plaque, a shawl, and an amount of 1 lakh rupees as award. So, what is Sahitya Academy? It was formally inaugurated by Government of India in 1954, and it was registered as a society under the Societies Registration Act of 1860, and it is an autonomous organization under the Ministry of Culture. Okay. So the next topic is National Tansen Samman. This topic is important for your art and culture section. Renowned tabla player of Indian classical music Pandit Swapan Chaudhary of Kolkata has been honored with the National Tansen Samman for year 2023. This award was established in 1980 by the Madhya Pradesh government in the name of Music Emperor Tansen. It is the highest national music award in the field of Indian classical music. So who was Tansen? He was a prominent Indian classical music composer, vocalist and instrumentalist. He first stayed under the shelter of Daulat Khan, who was the son of Sher Shah Suri, and then was appointed as the court singer of King Ramchandra of Bandhavgarh. Later, he became one of the Navaratnas, that is the 9 Jews at the court of Akbar. Akbar gave him the title of Mia, and he is also given the credit for introducing some of the famous rag like Malhar, Todi, and Darbari. Okay. So the next topic is IRIS-2 program. This topic is important for your science and tech section. Recently, European Union has announced that it has signed the contract for infrastructure for resilience, interconnectivity, and security by satellite, which is a multi-orbital constellation of 290 satellites. So this IRIS-2 satellite constellation is the European Union's third flagship program of satellite internet, which is designed to offer connectivity services to government as well as private companies and individuals. So IRIS-2 will use both medium Earth orbit and low Earth orbit satellites. It will provide secure connectivity and high-speed broadband in zones where network connectivity is low or unavailable. So 264 satellites will be in low Earth orbit and 18 satellites will be deployed in the medium Earth orbits. And this program is developed in partnership with SpaceRise, which is an alliance of leading European satellite operators and space companies. This system can be used for maritime, railway, aviation, automotive, smart energy grid management, uh, banking, overseas industrial activities, remote healthcare, and enhancing rural connectivity as well. And this will also offer mobile and fixed broadband satellite access. Apart from that, cloud-based services will also be offered by this services. Okay, and navigation facilities for the transportation sector will also be provided with to areas which have no or low connectivity. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.